Hello students, myself Biswati Gurji. In the previous class we have discussed 5 main parts of the alimentary canal. Those were mouth, buccal cavity, pharynx, esophagus and stomach. Today we will discuss 3 main parts of the remaining of part of the alimentary canal. Those are the small intestine, large intestine and then the anus portion. So first of all we will discuss small intestine. First point, it is a long narrow tube having length around 6 to 7 meters. It is a long narrow tube having length around 6 to 7 meters. First point, it is a long narrow tube having length around 6 to 7 meters. Second point, it is divided or it consists of 3 main parts. First part duodenum, second part jejunum, third part is your ileum. आपण मानकर मन थिबो मु कहितली that the distal part of the stomach is the pyloric part and the pyloric part leads to which portion? Duodenum of small intestine. ता माने आमे कोन जानि पाले एथरु जे small intestine रो first part होचे हमरो duodenum. So we can ताहले हमरो तीनटा portion present अछि हमरो small intestine रे. First one is the duodenum, second one is your jejunum, third one is your ileum region. So second point होची आ गोटे पॉइंट मु कहबा को भूली गली द आपण माने मार्क करिवे सब गुडा हमें सेंटीमीटर रे हमें देखुतले लेंथ गुडा किंतु एटा मार्क करंतु द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज 6 to 7 meters. ताले हम कहि परिबा it is the longest part of the alimentary canal. कहि परिबा नै काहे 6 to 7 meters not centimeter. ता माने हम इजीली कहि परिबा it is the longest part of the alimentary canal. तो second point, it is the longest part of the alimentary canal. बुझी पाले? थर्ड पॉइंट एबे लिखिबा थर्ड पॉइंट आपनकर द स्मॉल इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स, दैट इज duodenum, jejunum and ileum. Small intestine consists of 3 main parts, duodenum, jejunum and third part ileum. बुझ पाले? First point we'll discuss the duodenum. The length of the duodenum is about 25 cm. The length of duodenum is about 25 cm. First point, माने तार लेंथ होचे अराउंड 25 cm. जतिक भी हमरो पार्ट्स देखुचे duodenum, jejunum और ileum सबठू स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द duodenum. ताले duodenum रो केतरा पॉइंट फर्स्ट लिखिबा duodenum. First point, it is the smallest part of the small intestine. It is the smallest part of the small
intestine. Length केते? Having length around 25 cm. Having length around 25 cm. Next point. Here is shape कौन? What is the shape of the duodenum? Its shape is somehow or somewhat C-shaped. Its shape is somewhat C-shaped. Its shape is somehow C-shaped. C-shaped. बुझिपारे? Next point. It is thick-walled, having much coiled and more vascularized. माने कौन? मुझे लिखी दूँ तापर मुझे बुझेबी. It is coiled, vascularized, and thick-walled. माने कौन? It is somehow coiled. Coiled माने गुड़े इकना थिबो. Vascularized माने presence of blood vessels. Thick-walled माने wall टा आपनकर thick रहबो. ता माने the main point is it is thick-walled, it is coiled-like structure, and it is the vascularized माने presence of blood vessels. Next, last point in the case of small intestine, that the iron is being mainly absorbed in the small intestine region. Iron is mainly absorbed in the small intestine region. ताहले केतरा पॉइंट हम देखले? टोटल 4टा पॉइंट. फर्स्ट होची it is the smallest part of the small intestine, having length around 25 cm. And its shape is somehow C-shaped. बुझिपारे? It is the smallest part of the small intestine, having length around 25 cm. Its shape is somehow C-shaped. बुझिपारे? Third point, important point. It is coiled, vascularized, and thick-walled. बुझिपारे? Last point, iron is being mainly absorbed in the duodenum region. बुझिपारे? ताले ए पोर्शन हम पढ़िले एबे कोटा duodenum पोर्शन एबे देखिबा jejunum. बुझिपारे? Next is your jejunum. Next part that comes under the small intestine is your jejunum. सिंपल पॉइंट हिसाब से कहबी जमती आप इजिली मन रखि पारे. लास्ट मु डिफरेंशिएट कहीकि कहीदेवी जमती आप इजिली मन रखिदेवे तीनटा आपको माने घोषिया पड़ो. देखो सेकेंड इज योर जेजुनम. जेजुनम इट्स लेंथ इज अबाउट 2.5 मीटर. बुझिपारे? डिओडेनम लेंथ केते थिला? अराउंड 25 cm, बट द लेंथ ऑफ द जेजुनम इज अराउंड 2.5 मीटर. First point, its length is around 2.5 meter. बुझिपारे? Next point,
it is much more coiled and much more vascularized as compared to the duodenum, and also it is much more thick walled as compared to the duodenum. It is also thick walled, and much more coiled and vascularized as compared to the duodenum. बुझिपारे? Simple point. Its length is around 2.5 cm. It is thick walled, little bit thick walled than in compared to the duodenum, but it is much more coiled and much more vascularized as compared to the duodenum. माने कौन? अधिका कॉइल्ड मान कौन गुड़े हवा जेतिक अमाउंट ऑफ डिओडोरम टा गुड़ेकिना अच्छी से ताटू बहुत अधिका टिके गुड़ेकिना अच्छी. वैस्कुलराइज माने प्रेजेंस ऑफ ब्लड वेसल्स जेतिक अमाउंट ऑफ ब्लड वेसल्स आपन को डिओडोरम रीजन रछि मच मोर अमाउंट ऑफ ब्लड वेसल्स, और वी कैन से सिंपली वैस्कुलराइज्ड इन केस ऑफ द जेजुनम, मीन्स मोर अमाउंट ऑफ ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट. बुझला आपनकर? नेक्स्ट द लास्ट पार्ट इज द इलियम रीजन. अच्छा, its length, first point, its length is around 3.5 meter and it is the largest part of the small intestine. बुझिपारे? 3.5 मीटर जेहेतु 3.5 मीटर ताहले लार्जेस्ट पार्ट आम कहि परिबा इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. फर्स्ट पॉइंट, इट्स लेंथ is around 3.5 meter. बुझिपारे? and it is the largest part of the small intestine. Largest part of the small intestine. बुझिपारे? जेहेतु तार लेंथ होची 3.5 मीटर, इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द आमर स्मॉल इंटेस्टाइन. नेक्स्ट पॉइंट, इन केस ऑफ डिओडोरम एंड इन केस ऑफ जेजुनम इट इज थिक वॉल्ड, मच मोर कॉइल्ड एंड मोर वास्कुलराइज्ड, बट इन केस ऑफ इलियम इट इज थिन वॉल्ड, लेस कॉइल्ड एंड लेस वास्कुलराइज्ड. It is thin walled, less coiled and less vascularized. बुझिपारे? मूल पूरा सरीगला पर इजिली केमती मन रहा पुणी कहीदेवी. ताले इलियम रो दीटा पॉइंट आपन को मेन रहिला. Its length is around 3.5 meter, so it is the largest part of the small intestine. Second important point, it is thin walled, having less coiled and less vascularized in structure. बुझिपारे? So these were your three structures that come under the small intestine. First one is your duodenum, second one is your jejunum, and third one is your ileum part. आमे आ गोटे पॉइंट भी ऐड कर परिबा. Duodenum is the first part of the small intestine. Jejunum is the second part of the or the middle part of the small intestine, and ileum it is the distal part of the small intestine. Distal माने last part. First part रहिला हमरो duodenum, second part किंबा middle part रहिला jejunum, third part is your or distal part is your ileum. Next आ गोटे general point रहिला presence of pair patches. बुझिपारे? नेक्स्ट पॉइंट कहूँ मु
occurrence of pair patches is the important characteristics of the small intestine as it helps in producing lymphocytes. लिखि दोची फर्स्ट रे एटा ओवरऑल जनरल पॉइंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. Occurrence of pairs patches in small intestine helps in producing lymphocytes. ये पॉइंट माने कौन पेयर्स पैचेस मीन्स इट आप बहुत इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव आसपे पेयर्स पैचेस माने इट इज समहाउ स्मॉल मास लाइक स्ट्रक्चर गोल गोल मास भाया स्ट्रक्चर जमी छोट छोट मांसपिंडूल आम कहीपर से भाया किसी स्ट्रक्चर दोज आर प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन which helps in producing lymphocyte. Lymphocyte मान कौन it is a subtype of the white blood cell. हम पढ़े leukocyte तापर erythrocyte. So it is a subtype of the white blood cell which helps in maintaining our immunity system. जहाँ द्वारा कि आम देहर प्रतिरोधक शक्ति को सी बजाय रखी था कि मेंटेन कर रखता है. So we can say it is the important point. मन रखते समझते occurrence of pairs patches in small intestine helps in producing lymphocytes. Lymphocytes कौन it is a sub part of the white blood cell. मन रखंतु आगु वाला हम डिटेल पढ़िबा सब पार्ट ऑफ WBC लिखि दउजी white blood cell बुझि पाले which helps in maintaining our immunity system. नेक्स्ट पॉइंट द नेक्स्ट आम देखिले स्मॉल इंटेस्टाइन तीन टा पार्ट आसला. फर्स्ट इज द डिओडेनम, सेकेंड इज द जेजुनम, थर्ड इज योर इलियम रीजन. अच्छा स्मॉल इंटेस्टाइन जो सरे से पुणी तो लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हम ताहले जेमती आम स्टोमा केस रे पढ़ी द पाइलोरिक पार्ट लीड्स टू द डिओडेनम ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. एग्जैक्टली दैट वे द इलियम पार्ट of the small intestine leads to or opens into the cecum region of the large intestine. The first part of the large intestine is your cecum region. तो आ गोटे पॉइंट भी मन रखंतु the ileum opens into cecum by an opening and it is guarded by ileocecal valve which helps in preventing the backflow of the food from the large intestine into small intestine. Next point, ileum opens into cecum of large intestine by obviously by an opening and is guarded by ileocecal valve which helps in preventing the backflow of food from large intestine to small intestine. बुझिपारे ए पॉइंट हम आपको कहीदे फूडटा आम डाइजेशन हो जाए बहुत गुड़ा सेगमेंट डाइजेशन हो जाए बकल कैविटी देन इसोफागस आसला आमर स्टोमाक रीजन स्टोमाक आसला स्मॉल इंटेस्टाइन दे लार्ज इंटेस्टाइन लास्टली एनएस रे आमर जी फिकल मैटर हिसाब से एलिमिनेशन हो ताले फूड्र गोटे प्रोसेस अच्छी जीवार
जेहेतु फॉरवर्ड डायरेक्शन से मूव कर आसुची ताहले स्मॉल इंटेस्टाइन रे जति डाइजेशन हवा कथा ऑलमोस्ट हो जाए ती डाइजेशन हवा कथा डाइजेशन हो नेक्स्ट जी पोर्शन रहा सी पुणी जीव आमर लार्ज इंटेस्टाइन को ताहले जो पोर्शन द्वारा जाइए सी जीव दैट इज नोन एज व्हेन द इलियम रीजन ओपन्स इनटू द सिकम रीजन इट गो बाय द हेल्प ऑफ इलियोसिकल जंक्शन जोटा कि आम आगू पढ़ा दैट ओपनिंग माने इलियोसिकल जंक्शन माने इलियम रू आपन को आसिला फूड जोटा कि सिकम लार्ज इंटेस्टाइन रे एंट्री करिवो जेते एंट्री करि जीवो सी जंती बैकफ्लो माने पछको जंती न आसी जाऊ से गोटे हमर भाल्व प्रेजेंट अछि भाल्व माने कोन द मेन फंक्शन ऑफ द भाल्व टू प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ एनी सब्सटेंस और वी कैन से एनी सब्सटेंस किसी भी पोर्शन किसी भी जिनस को आगो को जीव सी जंती पछको न पळे आसु सेटा को प्रिवेंशन करिया पे हमर भाल्व रो मेन काम थाए तो we can say the ileum regions opens into the cecum of the large intestine and that opening is guarded by the ileocecal valve. बुझी पाले ileum opens into cecum of large intestine by an opening and it is guarded by ileocecal valve. Important point, ileocecal valve which helps in preventing the backflow of food from large intestine to small intestine. बुझी पाले नेक्स्ट विल डिस्कस ओवरऑल फंक्शंस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. First point, it helps in complete digestion of the food. Major digestion up to जतले आमर small intestine देकी से pass करे तर major digestion टा हो जाता है. तो we can say it helps, first point or and the first important point is that it helps in complete digestion of the food. First point, it helps in complete digestion of food. बुझले. Second point, it helps in absorbing nutrients into blood and lymph. It helps in absorbing nutrient into blood and lymph. माने कौन जति भी न्यूट्रिएंट्स आम खाद्य थाए ताकू से एब्जॉर्ब करिवारे हेल्प करे जति सब इंपोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स गुड़ाक कौन से ट्रांसफर कर इनटू द ब्लड एंड द लिम्फ. ब्लड तो आप जानते दो बोथ आर द बॉडी फ्लूइड्स. ब्लड आप जानते लिम्फ इज ऑल्सो ए बॉडी फ्लूइड which consists of the white blood cells. बुझी पाले. So the which produce the lymphocytes जोटा कि आमर प्रतिरोधक शक्ति कि आमर इम्यूनिटी सिस्टम को माने मेंटेन करिवारे हेल्प करे. So we can say it helps in absorbing nutrients into blood and lymph. Third point, it helps in secreting various gastrointestinal hormone. ध्यान से सुनो तो it helps in secreting various gastrointestinal hormone like secretin, cholecystokinin, pancreozymin, which helps in regulating the flow of the bile and pancreatic juice into the duodenum. मु कहूँ it helps in secreting various gastrointestinal hormones
such as secretin, pancreozymin, which helps in regulating the flow of bile and pancreatic juice into duodenum. बुझिपारे इटा तार मेन इंपोर्टेंट पॉइंट. इट हेल्प्स इन सिक्रेटिंग वेरियस गैस्ट्रोइंटेस्टिनल हार्मोन सच एज सिक्रेटिन तापरे पैंक्रोजाइमिन हो कोलिकोसिस्टोकाइनिन भी मुझे आपको कहली which helps in regulating the flow of bile and the pancreatic juice into duodenum. माने कौन बाइल टा हमर सिक्रेट होता है कोठू लिवर आम आगु जाए पढ़ा. पैंक्रियाटिक जूस ओब्वियसली सिक्रेटेड फ्रॉम द पैंक्रियास. दीटा आगो जोटा कि हमर डाइजेशन रोल रे बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करती. डाइजेशन करिबारे बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करती. तार रेगुलेटिंग टा केतिक अमाउंट ऑफ फ्लो होगा दरकार, केतिक अमाउंट ऑफ हमको बाइल दरकार, केतिक अमाउंट ऑफ हाउ मच अमाउंट ऑफ वी रिक्वायर द पैंक्रियाटिक जूस. सो दैट अमाउंट और वी कैन से द फ्लो इज बीइंग रेगुलेटेड by some gastrointestinal hormones such as secretin, cholecystokinin and pancreozymin. That gastrointestinal hormones is being secreted by the small intestine. बुझी पारले? The flow of the bile and the pancreatic juice, how much amount of or the regulating or the flow ताको regulate करूची किए the gastrointestinal hormones such as example secretin, pancreozymin or cholecystokinin. Those the gastrointestinal hormones are being produced or secreted by which part? By the small intestine. So this is the important point. मन रखंतु it helps in secreting various gastrointestinal hormones such as secretin, pancreozymin, or you can also include the cholecystokinin, which helps in regulating the flow of bile which is produced by liver and the pancreatic juice which is produced by pancreas into duodenum. कि ताको डाइजेशन प्रोसेस को आगो को नबा को हेल्प करे. लास्ट पॉइंट इज द पेयर पैचेस. लास्ट पॉइंट इज योर पेयर्स पैचेस. आगुर कहि सारछि मु पेयर्स पैचेस हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग lymphocytes. बुझिपारे आगुर कहि सारछि पेयर्स पैचेस आर स्मॉल masses like structure. Those are present in the small intestine region. These helps in producing lymphocytes which is a sub part of the white blood cell which helps in maintaining our immunity system. So this is all about your small intestine. Small intestine बहुत important part and it is the most 6th important part of the alimentary canal. मैं फर्स्ट टू केमती डिटेल रे आपण इजीली मन रखनेबे सेटा कहूची. स्मॉल इंटेस्टाइन रो लेंथ केते? इट्स लेंथ इज अराउंड 6 to 7 meters. It is the longest part of the alimentary canal. जदि ऑब्जेक्टिव आसिला which is the longest part of the alimentary canal ताले आपण आंसर कोन देबे स्मॉल इंटेस्टाइन. लेंथ केते? 6 to 7 meter. नेक्स्ट पॉइंट. It consists of 3 main parts. कौन कौन? Duodenum, jejunum and ileum. Duodenum, jejunum, ileum को केमती आपण मन रखियो. Duodenum रो लेंथ कहबी, jejunum रो लेंथ कहबी, ileum रो लेंथ कहबी. Duodenum रो मेन इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक कहबी, jejunum रो कहबी, ileum रो कहबी. और duodenum रो आउ दीटा एक्स्ट्रा पॉइंट अछि. Duodenum रो लेंथ, its length is around 25 centimeter. Jejunum, its length is around 2.5 meter. Ileum, its length is around 3.5 meter. That is why duodenum is the smallest part of the small intestine, whereas the ileum is the largest part of the, or the longest or the largest part of the small intestine. Second important point, कोटार wall केमती vascularized ना coil. अच्छा, first point, duodenum is thick walled,
coiled and vascularized. Jejunum is thick walled but much more coiled and much more vascularized as compared to the duodenum, whereas ileum is thin walled, less vascularized and less coiled. बुझला डिस्टिंग्विश हिसाब से कहली आ दुटा इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हमरो duodenum रहला. It is somehow C shaped and mostly iron is being absorbed in the duodenum region. Easily बुझला. Next point, Peyer's patches are the small masses like structure that are present. Peyer's patches are the small masses like structure that are present in the small intestine, which helps in producing lymphocyte, which is a sub part of the white blood cell, and it helps in maintaining our immunity system. Then the ileum region opens into the cecum part of the large intestine, and that opening is being guarded by the ileocecal valve. बुझ पाले लास्ट लाभर फंक्शन चार्टा इंपोर्टेंट आउ इजी फंक्शन कौन कौन. फर्स्ट पॉइंट, इट हेल्प्स इन कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द फूड. खाद्य को संपूर्ण ऑलमोस्ट संपूर्ण डाइजेशन करिवारे से हेल्प करे. फर्स्ट पॉइंट, इट हेल्प्स इन कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द फूड. सेकंड पॉइंट, it helps in absorbing nutrients into the blood and lymph, which are both are the body fluids. बुझ पाले. Third point, it helps in secreting various gastrointestinal juices, gastrointestinal hormones such as secretin, pancreozymin or the cholecystokinin. Secretin, pancreozymin or the cholecystokinin, which helps in regulating the flow of the bile which is produced by the liver, and the pancreatic juice which is produced from the pancreas into the duodenum. बुझ पाले. लास्ट पॉइंट मु कहि सारछि, Peyer's patches helps, or the occurrence of the Peyer's patches is the most important characteristics of the small intestine, which helps in producing lymphocytes, which helps in maintaining our immunity system. बुझे बहुत इंपोर्टेंट थिला एटा, से आराम से स्लोली कहली आउ डिफरेंशिएट भी करके कहदेली जमती आपन को इजीली मन रही पारिबो. सो आपनकर नेक्स्ट असाइनमेंट रहिला स्मॉल इंटेस्टाइन रो टिके पोर्शन जहाँ भी इंट्रोडक्शन से लिखिए. 3टा पॉइंट duodenum, jejunum आउ इलियम लिखिए. तापर भाल्व ऊपर लिखिए, पेयर्स पैचेस ऊपर लिखिए आउ 4टा फंक्शन तार लिखिकिना मत पर्सनली व्हाट्सएप करिवे. So this is all about your 6th important part of the alimentary canal. In the next class we will discuss the remaining 2 part of the alimentary canal. Those are the large intestine and the anus. Anus टा बहुत अल्प समय लगे, large intestine टा टिके समय आपन को लगे. So this is all about your today's class. Thank you.